Hello students. Beta, in my last video we discussed integrating factor. We will use two rules. First, homogeneous equation, and second, y f function of xy dx plus x function of xy product dy equal to 0. Today we will start rule third to find integrating factor. If in the equation m dx plus n dy equal to 0, del m upon del y minus del n upon del x upon n is equal to function of x, then integrating factor is e the integration, okay, e the integration f x dx, okay. बेटा ये आप प्रूव कर लगे फर्स्ट बेटा प्रूफ देखो इसका आज रूल थर्ड ते रूल 4 करांगे बेटा इस वक्त रूल 4 डिस्कस करांगे बेटा in this case if this one is the integrating factor बेटा ये integrating factor है then we multiply given equation with this equation become exact then m into e the power m into e the power integrating factor means fx dx plus into dx plus n into e the integrating factor fx dx dy equal to 0 be exact. बेटा exact कब होएगा if del upon del y, this one is a m is the integration fx dx equal to del upon del x n is the integration fx dx. क्लियर है बेटा इक्वेशन एग्जैक्ट कब होएगी जब del m upon del y equal to del n upon del x. if बेटा इसका डेरिवेटिव करियो m की है पुत्र कांस्टेंट सॉरी दिस फंक्शन इज कांस्टेंट e दी पावर क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है बेटा तो डेरिवेटिव किसदा ओनली m बेटा किसदा डेरिवेटिव करांगे ओनली m. देखो बेटा इस तरफ del m upon del y this one if this one is constant e the power fx dx is equal to then this one product rule beta क्योंकि n is a function of x and y this one also function of x then n derivative of second beta derivative integration पहला e the power x है e the power x beta फिर इसका then integration and derivative cancel plus del n upon del x e the power fx dx then this function cancel both sides. So we have del m upon del y equal to n plus del n upon del x. Okay बेटा into fx रहेगा बेटा into fx plus del n upon del x. If del m upon del y minus del n upon del x n into fx. If del m upon del y minus del n upon del x upon fx is equal to n sorry upon n this one equal to fx which is true because अपन given है बेटा देखो statement देखो बेटा अपन given है with this one equal to function of x. So बेटा if equation del m upon del y minus del n upon del x upon n function of x and then this one is the integrating factor. Beta rule 4 if del m upon del y statement होया if equation this minus del n upon del x upon m is a function of y then integrating factor is a the integration minus फंक्शन ऑफ y dy. सो बेटा दो रूल इकट्ठे मैं एक एग्जांपल दे विच दोनों रूल समझा रहा बेटा रूल थर्ड एंड रूल 4. सो फर्स्ट बेटा ਆਪਾਂ एग्जांपल ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ रूल थर्ड ਨਾਲ फिर सेम एग्जांपल आप रूल 4 ना करांगे.
ਸੋ ਬੇਟਾ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਸਟ ਵੀ ਸੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਔਰ ਨੋਟ, ਇਫ ਨੋਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਫॉर्म, सेकंड रूल, थर्ड या फोर। ओके फर्स्ट बेटा वी डिस्कस एग्जांपल ऑफ रूल थर्ड एंड फोर। So beta example, solve this equation. Cos x cos y dx minus 2 sin x sin y dy equal to 0. Compare with so m equal to cos x cos y and n equal to minus 2 sin x sin y. Okay. So we have del m upon del y. This one equal to minus cos x sin y and del n upon del x minus 2 cos x sin y. So equation not exact, both are not equal, so equation not exact. Then del m upon beta first rule homogeneous, no. Second rule product function of x y, no. So now first rule apply hunda na second rule. Then we apply third or fourth. Del m upon del y minus del n upon del x. We have cos x cos y. Then we divide by del m upon del y. पहला rule third बेटा, divide by n. Okay, we have cos x cos y upon minus 2 sin x sin y. Okay बेटा, cos x sin y. Okay, so this minus 1 by 2 cot x. So beta first this one is a function of x. Okay, if we divide by n, this one is a function of x, then integrating factor is a the integration fx dx. So integrating factor is a the integration minus 1 by 2. So beta integrating factor is equal to a the minus 1 by 2 integration cot x dx. Beta cot x the integration log sin x. Okay beta. Then this one equal to a log sin x the power minus 1 by 2. E log cancel beta, 1 upon root sin x की आ गया बेटा आपके लगे integrating factor. Then we multiply given equation cos x cos y upon root sin x dx minus 2 sin y upon root sin x dy equal to 0. This equation will become exact. Then solution is integration m, ठीक है बेटा, dx plus n not containing x. So बेटा टर्म bso equal to c. So बेटा की आ गई टर्म आप लगे cos y constant cos x बेटा sin x the power minus 1 by 2 dx equal to sin x the derivative बेटा cos x. So we have cos y sin x the power 1 by 2 upon 1 by 2 equal to c. Okay, so we have बेटा constant is scaling कर दो बेटा, ये करने cos square y sin x equal to capital C बेटा, multiply करके constant उसमें capital C रख ले बेटा. So this one is a solution of equation. Okay, किया है बेटा cos square y into sin x equal to c. If we apply बेटा rule a is third, और अप्लाई 4 भी हो जाएगा बेटा. देखो बेटा वी अप्लाई रूल 4. बेटा देखो डिवाइड बाय m. ओके, cos x
sin y upon m cos x cos y. So this one is a function of y. So integrating factor is a the integration minus function of y dy. Okay बेटा. So integrating factor is a the कितना आ गया बेटा tan y minus tan y dy. Okay. a the माइनस माइनस प्लस बेटा कितना होता है tan y का माइनस बेटा log cos y. Okay. This one equal to cos y. So बेटा solution is, so पहला multiply बेटा with integrating factor cos x cos square y dx minus 2 sin x sin y cos y dy equal to 0. Solution is m dx plus not containing x 0 आ गया बेटा c. Okay. So we have cos square y cos x का इंटीग्रेशन कितना आ गया बेटा sin x. बेटा ये फर्स्ट ਆਪਾਂ थर्ड रूल ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ. ਸੋ बेटा AC रूल थर्ड एंड रूल फोर्थ नेक्स्ट वीडियो बेटा ਆਪਾਂ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ रूल 5. थैंक यू वेरी मच बेटा.